Hello everyone, welcome back to my channel. And today I will present my RTL Listen project. Name is of the Fair Access Sonar, and Fair Access Sonar using our made in our principle of Round Robin Arbiter. Let me some explain problem description. Firstly, you are the lead design engineer for the XX sonar. Imagine we are the lead design engineer of a research submarine called Fair Access Sonar, and this submarine is operating 10,000 meter below the Pacific Ocean, where the communication and monitoring are extremely critical. And this is our 4 point of Fair Access Sonar. And this is our sensor. This firstly is a pressure sensor. It continuously monitors the submarine's hull pressure to ensure the submarine is safe under the extreme underwater pressure. Second is our oxygen monitor. It checks the oxygen level to keep the crew alive. And the third is our engine temperature sensor. This is it monitors the engine temperature to prevent the overheating problem. And all these three sensor is run is our engine temperature sensor is our run is our bit 0, and then bit 1, and then bit 2. And all three sensors must transmit data to surface via the single narrowband sonar link. All three sensors need to sensor that data through in one single sonar communication link, because since there is only one communication channel, only one sensor can transmit data at a time. And now it will use a fixed priority arbiter, and the pressure sensor always gets the highest priority as a result if all sensor continuously request access. And the engine temperature sensor, why the engine temperature sensor never get a chance to transmit, and this problem is known as starvation. If the if the engine temperature data is delayed, an engine overheat condition may go to undetected, and which could cause a serious damage to the submarine. Let me sum this line. The submarine experiences a massive underwater shift, in which causes a temporary power failure. Because of this, the digital system performs a cold boot during the startup, and the system must remain the inactive until the master reset signal is released. मतलब कि reset pin को release कर देगा. Let me some explain the mission of this my project. This is our simple mission, and this mission is covered in our two rule. First rule is our reset rule. While the reset is active and the sonar link must be muted, once the release, the system must be the prime, and to give the engine temperature sensor is 0 and the highest priority if all sensor requests at once. And this ensure we check the engine status immediately after the power failure. मतलब कि रीसेट रूल क्या है कि रीसेट रूल में अगर कोई भी डेटा आ रहा है, अगर सबमरीन को कुछ भी सोनार लिंक में कुछ डैमेज आया या वरना कोई प्रॉब्लम आया, तो सारा डेटा रीसेट हो जाएगा और फिर से सारे सेंसर को डेटा भेजने के लिए कहेगा. एंड आवर सेकंड रूल इज आवर द फेयरनेस रूल. इफ सेंसर 0 was just a sub, and the next priority becomes a sensor 1, and then sensor 2, and then sensor so on. मतलब कि फेयरनेस रूल क्या है कि जिसे और पॉइंटर वर्क, पॉइंटर में क्या हो जाता है कि सेंसर 0 है तो उसको सर्व कर दिया, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा वो फेयरनेस रूल बताएगा कि इसके बाद सेंसर 1 का नंबर, एंड देन सेंसर. दिस आर सिंपल मिशन ऑफ द प्रिंसिपल इन अवर राउंड रॉबिन आर्बिटर and my project. Let me some explain our port in my project. This is simple port diagram, and this is simple port clock, reset, request, and grant. These are our 3 input pin, and request pin are 3 bit, like a request 0, request 1, and request 2. Request 0 is the engine pressure sensor, request 1 is our oxygen sensor, and request 2 is our physically pressure sensor. And this is our grant 0 to 2 means 3 bit pins, and these are output pin.
this is our output of the data in grant form. 0, 1 and 2. Grant 0 is equal to engine temperature, 1 is equal to oxygen monitor, and 2 is equal to pressure sensor. Let me some explain our simple block diagram of my project. This is our simple block diagram of my project, and this is Abbas 1 Explorer, our sonar system. This is our clock system, and this is our reset, and this is our request. This is our also 3-bit, and this is our grant, and this is also 3-bit. एंड दिस इज व्हाट पिन, इसमें ग्रांट में कौन सी पिन आएगी. ग्रांट 0 इज इक्वल टू दिस अवर इंजन सेंसर को मिलेगा सबसे पहले, एंड देन ग्रांट 1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन सेंसर, ग्रांट 2 इज इक्वल टू प्रेशर सेंसर. ओके, लेट मी सम एक्सप्लेन अवर मोर in our EDA playground, and let me some write the Verilog code in our EDA playground. Okay, let me some explain our Verilog code in my project. This is our module declaration of the module, and this is my project name is our Round Robin Arbiter, and this is our input pin, our clock, reset, and request. And request pin is our also 3-bit pin, and this grant pin also 3-bit pin, and this is also is our output pin. Let me sub this line is a register line. लास्ट दिस इज ये बताएगा कि लास्ट सब किस ग्रांट मतलब कि किस सेंसर को मिला था, किस सेंसर को सबसे लास्ट में ग्रांट दिया था. लेट मी सम एक्सप्लेन अवर इनिशियल बिगिन, एंड ग्रांट इज अवर 000, मतलब कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करा तो लास्ट सब मतलब कि D2 मतलब कि 2 ने लास्ट सब किया था तो उसको ग्रांट दे दिया जाएगा. Let me some explain our this code, and this line is begin of the code. These are always line provide the some postage clock in our code. This if condition reset condition, मतलब कि reset पिन में क्या होगा कि 0 है तो वो reset में रहेगा, मतलब कि आगे का जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, और 1 करेगा मतलब कि यहाँ पे देखना लास्ट सब इज इक्वल टू 1. अगर रिसेट पिन आपको मैं दिखाऊँ, रिसेट पिन इज इक्वल टू n मतलब कि 1 से चालू होगा. 1 मतलब कि क्या कि अपना राउंड रॉबिन आर्बिटर का ऑपरेशन चालू हो गया, मतलब कि ये अभी यहाँ से बिगिन होगा. लेट मी सम एक्सप्लेन अवर ग्रांट इज इक्वल टू 000 एंड लास्ट सब इज इक्वल टू D2, मतलब कि लास्ट सब जिसको दिया था उसको ही वो सिंपली दे देगा. अगर आप अब सब रिक्वेस्ट कर, दिस केस इज अवर 3 केस इन अवर माई कोड, एंड दिस केस इज ये 3 केस में सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे सेंसर ग्रांट के लिए. लेट मी सम एक्सप्लेन वन बाय वन. This is our last request our 0, and then next priority is our 1. Okay, and if the request of one sensor provided in grant is equal to 1, and then next is our 2, and then next grant is our 0. This is our simple code, is our first test, एंड दिस अवर सेकंड टेस्ट. मतलब कि अब फिर से 3 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपने को पॉइंटर मतलब कि लास्ट सब क्या करेगा कि पिछली बार किसने दी थी, लास्ट सब इज 1, तो अब इस बार 2 को मिलेगी, फिर देन 0 एंड देन 1. अब थर्ड टेस्ट में ही वही हो रहा है कि लास्ट 2 को मिली थी, तो फिर देन नेक्स्ट प्रायोरिटी इज अवर 0 एंड देन 1 and 2. This is our simple code, and this code is run our simple purpose principle like of 3 tests, and this is our grant 000 and last sub is equal to 2, मतलब कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो लास्ट डेटा को सब दे दो. This is our simple Verilog code in my project. Let me some explain our test bench code. Let me some explain our test bench code, and this our normally time scale provide the 1 ns to 1 ps time. In my code run is our clock signal is 5 ns time. Let me see this 5 ns time. These are simple module declaration, name of the module, Abbas arbiter, and test bench code, and this our simple register clock provided, and all register is our input in our Verilog code, and all wire declaration in Verilog code in our output pin. एक simple our dot operation provide some
और डट ऑपरेशन में क्या होगा कि डट ऑपरेशन के टेस्ट बेंच के सारे पिन और अपने वेरीलॉग के पिन एक साथ कनेक्ट हो गए, मतलब कि दिस प्रोवाइडेड अवर इनपुट इन अवर टेस्ट बेंच कोड क्लॉक, क्लॉक टू क्लॉक, रीसेट टू रीसेट एंड रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट। दिस इज अवर इनिशियल क्लॉक इज इक्वल टू 0 एंड देन 1, मतलब कि ये लाइन क्या है, ऑलवेज 5 टाइम के बाद क्लॉक चेंज हो जाएगी, 0 1 1 0। लेट मी सम सिंपल फाइल सेव लाइन ईपीवीओ प्रोवाइड करने के लिए और डेटा को ईपीवीओ में बताने के लिए और वो डेटा को स्टोर करने के लिए। सीधी सिंपल फाइल लाइन। लेट मी सम एक्सप्लेन अवर टेस्ट सीक्वेंस। प्रोवाइड सम रिक्वेस्ट इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ से अपना चालू हो गया है राउंड रॉबिन आर्बिटर। रिक्वेस्ट अगर 0 0 0 मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो रीसेट इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये अभी चालू नहीं होगा एंड 2NS पे चालू नहीं होगा, 10NS ये सब ये जो ब्लू लाइन में है वो सब टाइम प्रोवाइड कर रहा है कि 2NS के अंदर ये चालू नहीं होगा। 10NS के बाद वो डिक्लेरेशन बता देगा कि कोड इज इक्वल टू बूट इन प्रोग्रेस। एंड देन लेट मी सम एक्सप्लेन अवर grant provide in 0 0 0, then this is a fail and this is a link not muted during the reset. these are simple if else condition, मतलब कि 0 है तो उसको फेल दे दो, अगर किसी ने रिक्वेस्ट मांगी हो, अगर वो प्रायोरिटी में आ रहा है तो उसको दे दो। लेट मी सम एक्सप्लेन दिस कोड एंड दिस कोड इज प्रोवाइडेड सम सेंसर इज एक्टिव, मतलब कि सारे सेंसर ग्रांट मांग रहे तो 1 बाय 1 उसको ग्रांट मिलेगा। लेट मी सम फर्स्ट ग्रांट इज अवर 0 0 1 एंड ये प्रोसेस क्लॉक पे काम करेगा, मतलब कि रिक्वेस्ट तो कर दी और अपना रीसेट पिन एक्टिव हो गया, मतलब कि राउंड रॉबिन ऑपरेशन यहाँ से चालू हो जाएगा। दिस प्रोवाइड सम प्रोसेस क्लॉक के 1 आएगा तब ये चालू होगा। प्रोवाइडेड सम 0 0 1 मतलब कि फर्स्ट सेंसर कौन सा है उसको सबसे पहले ग्रांट मिलेगी एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड। दिस इज सिंपल फंडामेंटल ऑफ इन दिस लाइन। प्रोवाइड सम I इज इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि 0 के बाद 1 को फिर देन I इज इक्वल टू 1 1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू सब फिर 2 0 1 2 एंड देन 2 0 1 एंड देन 1 2 0। दिस इज सिंपल fundamental in this line. And then is our display line, provide some our output in our display, and this is the end of the module. Let me some explain our run of the program and see our waveform in our my project. Selected tools and simulation bench. Let me some explain our EP waveform in my project. Let me some this is a clock signal, provide some clock 0 to 1 1 to 0, and this is our grant signal, provide 3 bit 0 1 2 and 4, and this is our simple I line. These were not included in my project. This is simple name of the data 0 1 2 3 and 32. This is our request point, this is our input pin, and this waveform is our input provided is equal to 7. And let me some explain our line by line. सबसे पहले फर्स्ट 0 0 0 मतलब कि कोई भी ग्रांट नहीं दे रहा है तो उसको स्टोर कर रहा है कि 2 तो लास्ट 100 किसको किया था उसके अंदर ये डेटा है जो वो 100 रहेगा। एंड रीसेट पिन यहाँ पे उसका 1 बता रहा है, मैंने क्या बताया रीसेट पिन 1 होगा तो ये राउंड रॉबिन आर्बिटर वर्क नहीं करेगा। अगर रीसेट पिन जैसे 0 आया तो राउंड रॉबिटर का ऑपरेशन चालू हो जाएगा। एंड देन प्रोवाइडेड इन रिक्वेस्ट अवर 7 मतलब 1 1 1 मतलब कि सारे सेंसर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ग्रांट मुझे चाहिए। लेट मी सम एक्सप्लेन अवर 1 बाय 1 सेंसर। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अवर ग्रांट 0 0 फर्स्टली प्रोवाइड कर रहे हैं कि सब ग्रांट मुझे दे दो ऐसे 1 1 1 करके, पर फर्स्टली प्रोवाइड करेगा 1 क्योंकि लास्ट में 0 को मिला था, फिर उसके बाद 1 एंड देन 2 and then 4 and then 1 and then 2. This is our simple principle of round robin arbiter, मतलब कि चाहे कोई भी एक साथ रिक्वेस्ट मांग रहे पर पॉइंटर उसमें पॉइंटर और लास्ट सब क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि लास्ट डेटा किसको दिया था, उसके बाद अब किसकी बारी है वो और लास्ट डेटा किसको दिया था वो सब देखेंगे, फिर उसके बाद सबको ग्रांट देंगे। These are simple EP waveform run in my project, and this is of the end of the session. Thank you guys.